Hello everyone, my name is Siddharth Panda. Welcome to OPSC STUDY. In today's Prelims Booster 2024, we will discuss another important topic of the day, that is National Human Rights Commission. World War II ପରେ 1948 ରେ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फर्स्ट टाइम पे साइन होता बाय यूएन कंट्रीज 1948 रे फर्स्ट टाइम पे आपनकर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आपनकर साइन करा जायतिला. तो ह्यूमन राइट्स कौन ना ह्यूमन राइट्स होची दोज राइट्स ऑफ द ह्यूमन जोटा कि वेरी एक्जिस्टेंस ऑफ कि आपन गोटे मनुष्य हिसाब रे जन्म हिचंती तो आपनकर किछिटा राइट्स रहिबो से जिंस को ही ह्यूमन राइट्स. फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट योर डिस्क्रिमिनेशन कि किए डिस्क्रिमिनेट करि परिबे नहीं, राइट अगेंस्ट द स्लेवरी, योर फंडामेंटल राइट्स, your constitutional rights, your legal rights, everything comes under your human rights. So World War II ପରେ first time ପାଇଁ human rights ଉପରେ बहुत focus ହେଇଥିଲା 1948 रे. Again 1948 रे आपनकर जेतेबेले UDHR साइन करा ହେଇଥିଲା बा UN कंट्रीज मानक द्वारा, it is not binding, इटा legally binding नो. However प्रत्येक कंट्री वर्तमान ए प्रिंसिपल्स को फॉलो करछन्ती. एठी केतेटा आर्टिकल्स अछि, 30 टा आर्टिकल्स अछि आपनकर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स ऊपर, जोटा कि फर्स्ट आर्टिकल जेंति कहूची अबाउट राइट टू इक्वालिटी, दैट एवरीबॉडी इज बोर्न फ्री एंड फ्री एंड दे हैव द राइट्स ऑफ लीगल एंड इक्वल राइट्स अछि जेमानकर से विषय कहूची आपनकर आर्टिकल 1. आर्टिकल 2 कहूची राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 3 आपनकर सेंति सिमिलरली कहूची. तो डिफरेंट 30 टा आर्टिकल्स रही अछि एवं 30 टा आर्टिकल्स जोटा अछि से 30 टी आर्टिकल्स रो ही इंडिया रो मध्य जो फंडामेंटल राइट्स अछि, जो लीगल राइट्स अछि, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अछि, आपनकर राइट अगेंस्ट राइट टू माइनॉरिटीज अछि इंडिया रे, राइट टू वुमेन्स अछि, एवरीथिंग फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ योर ह्यूमन राइट्स. सो इंडिया रे 1993 रे फर्स्ट टाइम पे गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी बना हितला, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन NHRC 1993 रे. सो इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी. अब से विषय वर्तमान आमे पढिबा. ह्यूमन राइट्स विषय पढिबार आउट जिंस होची ह्यूमन राइट्स सेव्स यू फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट्स सेव्स यू फ्रॉम ऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स सेव्स यू फ्रॉम सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी. सो ह्यूमन राइट्स बहुत इंपोर्टेंट. जदि हम सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट मध्ये देखिबा तो सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट लास्ट 2 इयर्स तळर गोटे जजमेंट थिला सुप्रीम कोर्ट रो कि इंडिया रे जदि ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबुठ बेसी कोठी होची ताले पुलिस स्टेशन रे होची. आपण मध्ये डरुथिबे पुलिस को. पुलिस रो गोटे ह्यूमन जो ह्यूमन ट्रीटमेंट को नेकी पुलिस रो जो एक्शंस अछि बहुत खराब बोली कि सुप्रीम कोर्ट बतैथिले कि सेठी सबुठ बेसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए पुलिस स्टेशन रे. तो बर्तमान आम जानिबा कि ये जो ह्यूमन राइट ऑफ प्रोटेक्शन पे इंडिया कौन कौन स्टेप नहीं. तो व्हाट इज द इन द न्यूज रे कौन अछि बस देखि दियंतु. द NHRC इज प्रिपेयरिंग टू डिफेंड इट्स ह्यूमन राइट्स प्रोसेस एट ए मीटिंग टू बी हेल्ड इन Geneva. See, NHRC is preparing to defend its human rights processes at a meeting to be held in Geneva. In this meeting, a decision on whether India's human rights body will retain its A status is expected to be made. जितेबाला कौन सी कंट्री रे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करिया पे गोटे ऑर्गेनाइजेशन रहउची. एंती डिफरेंट कंट्री रे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहउची ना. से ऑर्गेनाइजेशन माने केते भल से काम करूचंती से अनुसार से मन गोटे रेटिंग करा जाय थाए. और से जो रेटिंग टा करा जाय से रेटिंग रे डिफरेंट स्टेटस दिया जाय थाए. और सेटर जो सबटो भलो स्टेटस होची ए स्टेटस. तो हेई छी कोन ना इंडिया को 2023 रे जो ए स्टेटस मिलिबा कथा सेटा को होल्ड रे रखा जाय छी बिकॉज ऑफ सम रीजंस जोटा हम आगु को पढ़िबा. और वर्तमान जो 2024 रे मीटिंग टा हबो जेनीवा रे सेठी इंडिया ट्राई करिवो ए स्टेटस को रिटेन करिया पई, अगेन रिटेन करिया पई. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज NHRC? NHRC of India is an independent statutory body established on 12th of October 1993 मन रखितांतु as per provision of the Protection of Human Rights Act 1993 later amended in 2006. तो गोटे एक्ट फर्स्ट बना हला प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एवं से अंडर रे जो स्टैट्यूटरी बॉडीटा बना हितला दैट इज कॉल्ड NHRC. और एई एक्ट को लेटर केबे अमेंड करा हला 2006 रे.
So it's a statutory body. It is the watchdog of the human rights in India, that is rights related to the life, liberty, equality, dignity of the individual guaranteed by the Indian Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India. See, आपण देखुथिबे कि इंडिया रे तो फंडामेंटल राइट्स आपनकर सब जेतकी अछि सेटा दीज आर पार्ट्स ऑफ योर ह्यूमन राइट्स ता बाद रे मध्य एंती माइनॉरिटीज मन को पाई राइट्स अछि आगुरु जदि देखुथिबे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत थिला अनटचेबिलिटी जो इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सेटा मध्य बहुत थिला तो सेटा कोन करथिला गोटे ह्यूमन को आउट ह्यूमन को नीचा देखेबार जरिया थिला सेटा तो बहुत सारा ऑपरेशन होथला सप्रेशंस होथला तो यही सब जिनस को अटकेवा आपनकर एनएचआरसी गठन होता है एनएचआरसी एनश्योर करे कि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग राइट्स लाइफ राइट टू लिबर्टी राइट टू इक्वालिटी डिग्निटी सब मेंटेन होकी रहिबो. It was established in conformity with the Paris Principles adopted for the promotion and protection of human rights in Paris in October 1991. As I first said, आपनकर Universal Declaration on Human Rights जोटा थिला सेटा थिला 1948 रे से ऊपर अगेन आ गुटे आपनकर पेरिस रे गुटे एग्रीमेंट साइन हिथिला 1991 रे तार एक्सटेंडेड वर्जन एटा तो बेटर वर्जन जोटा पेरिस प्रिंसिपल्स किछि अडॉप्ट कराइथिला और से पेरिस प्रिंसिपल ऊपर बेस्ड करिके ताकू इफेक्ट दबा टू गिव इफेक्ट टू द पेरिस प्रिंसिपल फाइनली एनएचआरसी आपनकर गठन हिथिला इंडिया रे 1993 रे. कंपोजिशन देखंतु एनएचआरसी रो तो NHRC is a multi-member body consisting of a chairperson, 5 full-time members and 7 deemed members. तो किए अछंती चेयरपर्सन किए पारिबे ना गोटे रिटायर्ड सीजेआई और जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड और जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट हे पारिबे द चेयरपर्सन. मेंबर्स किए हेबे मन रखिथांतु इट्स 5 मेंबर फुल टाइम मेंबर होचंती 5 तो 5 फुल टाइम मेंबर्स जो अछंती किए अछंती 5 फुल टाइम मेंबर्स ना सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट होची गोटे सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ए सर्विंग और रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मन रखिथांतु सुप्रीम कोर्ट रो गोटे रिटायर्ड जज और ए सर्विंग जज हाई कोर्ट रो रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस. थर्ड होची को 3 जन पर्सन रहिबे आउट ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन शुड बी वुमेन. एटा ही वाला 1 दिस इज 1 2 एंड 3 जन टोटल 5 से 5 रु जने वुमेन रहिबे और हैविंग नॉलेज जो 3 जन पर्सन रहिबे सेमानकर हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स ऊपर सेमानकर नॉलेज थिबा दरकार वास्ट नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थिबा दरकार. तो जो टोटल 5 जन मेंबर अछंती वन मस्ट बी वुमेन. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखंतु द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए 6 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ मन रखिथांतु अपॉइंटमेंट किए करिवे प्रेसिडेंट रिकमेंड किए करिवो और 6 मेंबर कमिटी. 6 मेंबर किए रहिबे द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड 6 मेंबर कमिटी रो हेड रहिबे प्राइम मिनिस्टर देन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा देन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किए रहिबे लोकसभा रे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किए राज्यसभा रे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किए. तो एटे ही गला आपनकर 1 1 1 एटे ही गला 2 then 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6 is your home minister. तो एटा हे गला 6 मेंबर कमिटी. एटा क्वेश्चन गोटे प्रोबेबल क्वेश्चन एठू आसी पारिबो. नेक्स्ट टेन्योर देखिबे तो आइदर दे कैन होल्ड 3 इयर्स ऑफ टर्म और 70 इयर्स ऑफ एज जोटा आगो हे पारे. तो जदी चेयरपर्सन और मेंबर्स मानकर मैक्सिमम टेन्योर केते 3 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ एज जोटा. The president can remove the chairman or any member from the office for misbehavior or incapacity with consultation with the Supreme Court. तो inquiry किए करिवो सुप्रीम कोर्ट inquiry करिवो एवं रिमूव किए करिवे को बेसिस रे ना misbehavior और incapacity जिनसे कोठी आपण मने पकंतु मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जोटा थिला आपनकर कोनोसी सुप्रीम कोर्ट रो जज को भी जदी आपण रिमूव करजंती ताहले किमा जदी इलेक्शन कमिशन को आपण रिमूव करजंती ताले सेही केस रे आपण को मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एई दुईटा ग्राउंड जरूरी थिला. तो सिमिलरली एनएचआरसी रो चेयरमैन या मेंबर को जदी रिमूव करबा को हेले मध्ये ग्राउंड कोन दरकार मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. किए इंक्वायरी करिवो सुप्रीम कोर्ट रिमूव किए करिवे प्रेसिडेंट. देन देखंतु जीएनएचआरआई ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ता माने होची जेंती इंडिया रे एनएचआरआई अछि आपनकर एनएचआरसी अछि नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन. सिमिलरली पाकिस्तान रे किछि थिबो बांग्लादेश रे गोटे ह्यूमन राइट कमिशन थिबो
तो डिफरेंट जो वर्ल्ड रे जति की कंट्रीज और सेमानकर ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस अछि सेमानकर गोटे अलायंस को कहा होछि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन और ये जो जीएनएचआरआई अछि से कोन करे ना इवैल्यूएट करे कि प्रत्येक कंट्री रो जो एनएच ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन अछि केमिति काम करूछि से अनुसार से मानको कोन स्टेटस या रेटिंग्स प्रदान करि थाए कि जीएनएचआरआई इज रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रस्टेड पार्टनर विथ द यूनाइटेड नेशन. It was established in 1993 as the International Coordinating Committee of the National Institution for the Promotion and Protection of the Human Rights. It has been known as the Global Alliance of National Human Rights Institution since 2016. जेतबे स्टार्ट हिथिला GNHRI रो ना कोन थिला तार ना थिला इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस ICC. तो ये जो नाटा थिला ताको चेंज करा हितला 2016 रे एज GNHRI and is member based network organization that gathers NHRI's national human right institutions from all over the world. It is composed of 120 members. India जो गोटे मेंबर अच्छे टोटल GNHRI केतेडी मेंबर 120 मेंबर. इंडिया इज वन ऑफ द देम और तार जो आपनकर हेडक्वार्टर कोची होची स्विट्जरलैंड जिनीवा रे. हेतिपई अब न्यूज रे सुनिले कि जिनीवा रे इंडिया ट्राई करिवो ए स्टेटस को कोन रिटेन करिया पई किए दोची GNHRI दोची. तो GNHRI होल्ड करिची स्टेटस टाको देइनी. तो कोन पई देइनी एबे जे इंडिया को. तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरमेंट. तार आंसर होगा लैक ऑफ द डाइवर्सिटी इन द स्टाफ एंड लीडरशिप. तो जो अपन एनएचआरआई एनएचआरसी इंडिया रो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जो डाइवर्सिटी ऑफ स्टाफ रहबा कथा देयर इज द लैक ऑफ डाइवर्सिटी अछि. इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. इंडिया रे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मानन को पाइन किछि सफिशिएंट एक्शन निया जाउ नाही. इन्वॉल्विंग द पुलिस इन प्रोब्स इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन. सी जेतेबेले इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो मानुचंती कि पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रे ह्यूमन राइट सबुठ बेसी वायलेशन होची. तो से वायलेशन को इंक्वायरी मध्ये किए करूची इंडिया रे ना पुलिस करूची. तो डू यू थिंक इठी कोन इंटरेस्ट क्लास होची बेसिकली. तो जीए सबुठ बेसी वायलेट करूची से ही इंक्वायरी करिवो तो ठीक से इंक्वायरी होबो नहीं. दिस इज वन ऑफ द रीजन कि तार इंडिया रो जो एनएचआरसी रो ए स्टेटस टाको वर्तमान होल्ड करा जाईची. पुअर कोऑपरेशन विथ द सिविल सोसाइटी. So GNHRI said that NHRC has repeatedly failed to deliver its mandate, in particular to protect the rights of the people from the marginalized community, religious minorities and human right defenders. If you have seen in news, बहुत सारा आपनकर religious persecutions होची, आपनकर बहुत सारा आपनकर कोन होची कम्युनिटी क्लासेस होची माइनॉरिटीज मान एवं रिसेंटली देखिथिबे आपनकर एमपी रे कोन हितला गोटे शेड्यूल कास्ट सॉरी शेड्यूल ट्राइब रो गोटे लोक उपरे आ गोटे लोक परिस्रा कर देइथिला बेसिकली. तो दिस इज कोन ह्यूमन को मनुष्य भलिया देखा जाउने. तो एई सब जिंस इंडिया रे बहुत रैपिड एग्जांपल्स जोगु गोटे रॉन्ग मेसेज जाउची इंटरनेशनल फोरम रे. एनएचआरसी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस. सी एनएचआरसी वर्तमान कोन इट्स नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बिकॉज़ एनएचआरसी रो जो मेंबर्स अछंती सेमन को अपॉइंट किए करूची 6 मेंबर कमिटी. तो जहां हेले भी गवर्नमेंट रो इन्फ्लुएंस रहूची. प्लुरालिज्म नहीं एठी pluralism nahi. Diversity and accountability are contrary to the UN principles on the status of the national institution or the Paris principle. Paris principle जो demand करूची कि pluralism थिबो, independence थिबो, diversity थिबो, accountability थिबो. तो NHRC इंडिया रो NHRC से सब जिंस लैक रहूची. Next, what are the Paris Principle A status? देखिथांतु United Nations Paris Principle adopted in 1993 by the UN. The General Assembly provides the international benchmark against the national human rights institution. Basically किछि नुह एटा होची रेटिंग. वर्तमान आपण काम सेमानकर पेरिस प्रिंसिपल को फॉलो करूचंती कि नहीं केमिति काम करूचंती सेही बेसिस रे दिस आर कोन एटा होची आपनकर रेटिंग एजेंसीज. बेसिक एटा गोटे रेटिंग दिया जाय. So the Paris Principle set out 6 main criteria. 6टा criteria अछि जा बेसिस रे आपन को रेटिंग मिलिबो. Mandate and competence, autonomy from the government because India रे गवर्नमेंट रो इन्फ्लुएंस रहूची in the appointment of the members. तो ऑटोनॉमी पूरा रहू नाही. Independence guaranteed by the statute of constitution. Pluralism, adequate resources, adequate power of investigation. India रे पुलिस ही बेसी आपनकर एक्सप्लॉइट करूची ह्यूमन राइट्स को और इंडिया रे पुलिस ही ताको कोन इंक्वायरी करूची. तो एडिक्वेट पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन इवन एनएचआरसी रो नाही बेसिकली. तो
GNHRI is a group of 16 human rights agencies from each region. See, total केते human rights agencies अछंती अमेरिका रू 4टा अछंती, यूरोप रू आपनकर 4टा, अफ्रीका रू 4टा, एशिया पैसिफिक रू 4टा. तो 4 into 4 16 human rights agencies अछि that have the highest rating A for following Paris principles. तो 16टा एजेंसी रो हाईएस्ट ए रेटिंग अछि. इंडिया को केथरो मिलिछि? इंडिया को मन रखि थांतु 1999 रे थरे मिलिथिला, 2006 रे मिलिथिला, 2011 रे मिलिथिला और 2017 रे मिलिथिला. तो टोटल केते थरो मिलिछि? 4 थरो मिलिछि मन रखि थांतु. GNHRI had delayed its because of some of the problems of the NHRC staff and appointment. The NHRC is led by Justice Arun Mishra, who used to be the Supreme Court judge. तो अरुण मिश्र जे थिले जस्टिस अरुण मिश्र से कोन ना एनएचआरसी को लीड करूथिले. तो वे फॉरवर्ड देखंतु कि कोन करा जाई परिबो. द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू मेक एनएचआरसी's decision enforceable, ensuring that recommendation and the directives are effectively implemented. This will enhance the impact of and accountability of the NHRC interventions. वर्तमान एनएचआरसी कोन एनएचआरसी रो फुल पावर नाही, ऑटोनॉमी नाही, तार निजर की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नाही. तो बिकॉज ऑफ दैट एनएचआरसी फुल्ली निजर पावर को इंप्लीमेंट करि पारु नाही. गवर्नमेंट रो कोन ना सेटरे गवर्नमेंट रो भी इन्फ्लुएंस रहउची. बिकॉज ऑफ ऑल द स्टेट जोगु ताको ए स्टेटस ता मिली पारी नाही. तो गवर्नमेंट को कोन करिवा दरकार कि ताको मोर इंडिपेंडेंट बनेवा दरकार. गवर्नमेंट ताको एनएचआरसी को कोन करिवा दरकार, मोर पावर देवा दरकार इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन टर्म्स ऑफ फाइन एंड पेनाल्टी पाई मध्य. तो एई सब हेले ही एनएचआरसी गोटे इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन हिसाब रे काम करि पारिबो. Hope you have liked the video. Thank you very much.